Hello, friends. What's up? This is Harkirat Singh from ULO Education, and today in this live session, we'll be talking about how you can improve your speaking. I'll be taking questions as well, so please join us and join in as soon as possible, and share this video with your friends so we can bring out nice and great value out of things. So, my friends, please, in this live session, we'll be talking about speaking. Please share this video with your friends on WhatsApp. There is a share button on your screens, and we'll be talking about speaking, Ielts speaking test. So, I'll be telling you many things about speaking. I'll be teaching you about so many things which are really possible. And I'll be also taking questions from your side, and that would be good. So, if you have any sort of questions in your mind, then you can start asking those questions in this live session in the comment section. If you can see down there your screen, so you can ask these questions there. So that would be really good for you, and just let me know whatever your inquiries are. So today we'll be talking about speaking, friends. Any questions about speaking? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी हम सवालों की बात करते हैं, जो भी हम चीजों की बात करते हैं, उसको हम सवालों के जरिए ही सॉल्व करें. तो अगर आप आइल्स कर रहे हो, अगर आप आइल्स को प्रिपेयर कर रहे हो राइट नाउ, आपकी लाइफ में आप टेस्ट देना चाहते हो, उसके रिलेटेड आपको कोई भी सवाल है, एनीथिंग, कोई भी आपको सवाल है, तो आप इस YouTube लाइव के कमेंट सेक्शन में अभी डाल सकते हो. मैं बैठा हूं आपको आंसर करने के लिए. सो दैट वुड बी रियली 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 गुड. सो एनी क्वेश्चंस प्लीज टाइप डाउन, नीचे टाइप कर दीजिए. हिंदी में, पंजाबी में, इंग्लिश में आप टाइप कर सकते हैं आपके सवाल अबाउट IELTS स्पीकिंग टेस्ट. So as we all know, now we'll start with the basics, introduction and the middle part and the last part. So मैं आपको basics बताऊंगा इसके बारे में. उसके बाद we'll continue with your questions as well. So कोई भी सवाल है आपके मन में, वो आप टाइप कर सकते हो. I'll be really happy to answer you all about whatever you want to learn, and that would be really great. So we should start this live video. एंड एनी क्वेश्चंस प्लीज. उसके पहले जो लोग हमारे साथ लाइव में जुड़ चुके हैं, एक यस लिख दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में कि मैं क्लास शुरू कर सका. जस्ट अ यस. सो प्लीज राइट अ यस इन द कमेंट सेक्शन दैट कि आप ये क्लास लगा रहे हो. आई नीड टू नो दैट पीपल दे आर एक्टिव, एंड इट वुड बी वेरी गुड फॉर मी. सो इफ यू राइट डाउन यस, इट वुड बी रियली 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 गुड. सो एक यस लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, सो आई नो दैट यू आर इन द क्लास एंड यू आर स्टडिंग ऑलरेडी. सो मैं क्लास स्टार्ट कर सकता हूँ देन आफ्टर दैट. Yes, anyone please type a quick yes so I can start helping you out and start teaching you. Please type a yes in the comment section so we can start the class. Type a yes, a quick yes. अगर कोई yes type करेगा तभी मैं class start करूंगा. तो so I should know that the students are connected with my live stream so we can talk. Just a second. हाँ जी ਵੀਰੇ, ਵਧੀਆ ਵੀਰੇ, ਵਧੀਆ. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? मैं ऑफिस सीगा जी. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. ओके, मैं भेज देना. Okay. Yes, people, everyone who is in this live video, please type a quick yes so we can start. Right. So I'll tell you the basics of this learning IELTS and speaking. I'll tell you the basics at the starting. So there are 3 parts in IELTS speaking that I would like to tell you. These 3 parts. See, speaking is basically about speaking. So speaking, when you speak in front of public or you speak in front of examiner, one most important thing you have to keep in mind is that you are here only to speak and nothing else. So that's something
that you really should keep in mind before you do or you go anywhere or you implement things in your life, right? So you need to know that whenever you speak. हाँ जी, सिमरनजीत कौर ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ anything if you want to ask. I'm here to answer every question of yours. So till then ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਕਰੋਗੇ तो मैं ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਸ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, right? So the basics of speaking is very simple, people. It's just like you have to speak. Number one thing, you really have to speak, nothing else. So three parts ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ speaking ਵਿੱਚ. We have three parts in speaking test, IELTS speaking test. So what we do in these three parts, हम इस इन थ्री पार्ट्स में क्या करते हैं, किस तरीके के सवाल हमको पूछे जाते हैं और किस तरीके से हमने उनको आंसर करना है, इसी चीज को हम आज इस लाइव वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट? सो what happens here is what happens here is when we speak, there is part one. Now, what is part one all about? The part one is about making a difference of a clarity to you and your examiner. अब आप हो, आपका एग्जामिनर है, ये दोनों इंडिविजुअल्स आप एक दूसरे को मिलते हो, पहली बार मिलते हो. ऑफ कोर्स वी डोंट नो हु द एग्जामिनर इज गोना बी, सो यू आर गोइंग टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम. सो इट्स लाइक एन इंट्रोडक्शन. तो आप पहली बार अपने एग्जामिनर को मिलते हो. किसी भी इंसान को जब हम पहली बार मिलते हैं, हम बेसिक इंट्रोडक्शन करते हैं कि नहीं करते? तो ऐसे ही होती है आइल्स की इंट्रोडक्शन. सो दे आस्क यू अबाउट योरसेल्फ, आपका नाम, आपका शॉर्ट नेम, की व्हाट शुड they call you or how they should call you, and उसके बाद वो कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे. फॉर एग्जांपल देखिए, दोज टॉपिक्स कैन बी एनीथिंग. जो भी वो आपको इंट्रोडक्शन स्पीकिंग पार्ट वन में क्वेश्चंस पूछेंगे, वो क्वेश्चंस किसी भी चीज के बारे में हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल दे कैन बी लाइक about traveling, about making food, about cooking, about friends, about anything, any basic thing in your life. So to learn the fact that who you are, you need to just modify yourself, right? In a perspective. Yes, Simranjit Kaur has a question. Sir, मेरा एग्जाम 24 अप्रैल ਨੂੰ CIDPC पर मेरी स्पीकिंग हो गई ਸੀ, ਹੁਣ स्पीकिंग टेस्ट दोबारा होगा कि नहीं? मेरा एग्जाम 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆ. ओके सिमरनजीत कौर, मोस्ट प्रोबेबली ਤੁਹਾਡਾ स्पीकिंग एग्जाम दोबारा तो नहीं होएगा, बिकॉज ਸਪੀਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਦੁਬਾਰਾ. ਨਾਓ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਗਿਵ ਓਨਲੀ ਦ ਆਇਲਸ ਰੀਡਿੰਗ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਓਨਲੀ, राइट? इज दैट क्लियर? एनी क्वेश्चंस प्लीज पीपल पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. आप कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल होता है वो नीचे डाल सकते हो, राइट? तो वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट? वी वर टॉकिंग अबाउट सिमरनजीत कौर, यस. अगर आप कोई भी चीज प्रिपेयर करना चाहते हो सिमरनजीत कौर, तो यू कैन जस्ट टाइप डाउन द कमेंट सेक्शन और योर टॉपिक्स और व्हाटएवर. सो फर्स्ट पार्ट, स्पीकिंग पार्ट वन में वी जस्ट डू दिस. वी हैव टू गिव द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ हु वी आर. And speaking part two, now let's talk about part two. That's the cue card, and that's the very 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 important part of speaking test. So speaking test में part two में cue card में क्या होता है? There is a topic. वो कोई भी टॉपिक हो सकता है. अभी आपको ये इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है? क्यू कार्ड टॉपिक इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है, राइट? अब हम पंजाबी में या हिंदी में बात करें, यार आप मुझे इस रिमोट के बारे में कुछ बताओ, राइट? हम ऐसे बात करेंगे इस रिमोट के बारे में, हम ऐसे कुछ बता देंगे, हम ऐसे कोई बात कर लेंगे, हम कुछ ना कुछ तो बोल, यार ये रिमोट ना इस टीवी का है और इस टीवी में ऐसे हम, ये रिमोट की खासियत ये है कि इसमें बटन्स बहुत कम है. एंड ऐसे हम किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते हैं ना, क्योंकि हमको ये लैंग्वेज, जो लैंग्वेज हम बोल रहे हैं, ये लैंग्वेज हमको आती है, राइट? दैट इज द रीजन वी नो द लैंग्वेज. दैट इज द रीजन वेयर वी डेवलप दिस थिंग, दैट कि हम इसके बारे में बोल सकते हैं. सो इंग्लिश एंड आइल्स इज ऑल अबाउट स्पीकिंग. सो अगर आइल्स की हम बात करते हैं, स्पीकिंग टेस्ट की हम बात करते हैं, तो स्पीकिंग टेस्ट इसीलिए लिया जाता है कि बच्चे को इंग्लिश बोलनी आती है कि नहीं, क्या बच्चा इंग्लिश बोल पाएगा कि नहीं, क्या बच्चा इंग्लिश बोल सकता है कि नहीं. अगर हम इसी किसी टॉपिक को ले लें, रिमोट को ले लें, रिमोट के बारे में बोलने को ले लें, अगर हम यही क्वेश्चंस पंजाबी में या हिंदी में बोलें, तो हम आसानी से इसके बारे में 1-2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट भी बात कर सकते हैं, राइट? We talk on stupid things many a times in life. So that's the thing कि अगर आप इस रिमोट के ऊपर या ट्रैवलिंग के ऊपर या कुकिंग के ऊपर या किसी भी टॉपिक के ऊपर
आप 1-2 मिनट पंजाबी हिंदी में बोल सकते हो, तो क्या वही चीज आप इंग्लिश में कर सकते हो? अगर आप उस चीज को इंग्लिश में कर सकते हो, बड़ी आसानी से कर सकते हो, विच दैट मीन्स यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, you know how to speak in English and very fluently and very easily. अब फ्लुएंसी मैटर करती है, आपकी ग्रामर मैटर करती है, आप सेंटेंस फॉर्मेशन मैटर करती है, एंड ये चीजें तो मैटर बहुत ज्यादा करती हैं. तो you have to take care very keenly, you have to take care of this, that there are things that you have to do to improve your speaking, improve your fluency, and improve all such kind of things, right? So any questions, please put down in the comment section, people. I want you to ask questions, because if you ask questions, you become what you ask. सो सवाल पूछना स्टार्ट कीजिए कमेंट सेक्शन में. आई विल आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स, कि आपके जो भी सवाल होंगे आइल्स के रिलेटेड, इंग्लिश के रिलेटेड एंड इंग्लिश लर्निंग के रिलेटेड. दिस सेशन वी केप्ट इज ऑन स्पीकिंग, लेकिन अगर और भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. तो आफ्टर दैट विल गो ऑन द नेक्स्ट. नाउ पार्ट 2 क्यू कार्ड में अब मैंने आपको बता दिया कि वी हैव टू स्पीक ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक फॉर 1 to 2 minutes, जिसके लिए आपको कुछ समय दिया भी जाता है कि आप प्रिपेयर कर लो, राइट? अब आपके पास समय है कि आप प्रिपेयर कर सकते हो, आपके पास समय भी है. लाइक व्हाई क्यू कार्ड को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है आइल्स में, राइट? सो क्यू कार्ड को इंट्रोड्यूस इसीलिए किया गया है कि आप ऑन द स्पॉट आंसर्स दे सकते हो किसी चीज के बारे में या नहीं. अगर वही क्यू कार्ड आपको, अभी आइल्स सेंटर्स में क्या होता है, आइल्स इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, क्यों बच्चे इतना 3-3 महीने लगा के, 6-6 महीने लगा के भी अच्छे बैंड स्कोर नहीं हासिल कर पाते? क्या रीजन है इस चीज का, राइट? सिमरन जी, सरप्रीत कौर, आई विल आंसर यू जस्ट अ सेकंड, मुझे लेट मी एक्सप्लेन दिस. सो क्या रीजन है कि आइल्स सेंटर्स में या आइल्स इंस्टीट्यूट्स में भी स्टूडेंट पढ़ाई करके 6-6 महीने लगा के भी बैंड स्कोर्स नहीं ले पाते? बिकॉज वेयर वी स्टडी इज व्हाट इज प्रिपेयर्ड. हम जहाँ पे स्टडी करते हैं, यहाँ जिस इंस्टीट्यूट में हम पढ़ाई करते हैं, कोचिंग लेते हैं, वहां पे क्या होता है कि आपको प्रिपेयर्ड कंटेंट दिया जाता है. लेकिन मक्कड़ का क्यू कार्ड ले ले, लेस क्यू कार्ड ले ली, कोई भी क्यू कार्ड्स ले लीजिए, वो क्यू कार्ड्स को समझाया जाता है, यार ये क्यू कार्ड ले लो, इसको प्रिपेयर कर लो, अब इसको बोल लो, राइट? बट क्यू कार्ड वॉज नॉट इंट्रोड्यूस टू प्रिपेयर. अभी मैं बच्चों को देखता हूँ, हमारे इंस्टीट्यूट में भी मैं देख लो कभी यूएलओ एजुकेशन मोगा में, तो आई सी पीपल व्हाट दे डू इज, स्टूडेंट आस्कर ये क्यू कार्ड कब आएंगे सर, इसके क्यू कार्ड कब आएंगे? व्हाई डू यू नीड क्यू कार्ड्स व्हेन यू नो इंग्लिश? क्यू कार्ड्स आर रबिश थिंग्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन एस्पेक्ट ऑफ, जैसे मक्कड़ के क्यू कार्ड्स है, बच्चे वेट करते रहते हैं. व्हाई टू डू दैट? वो करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज जो क्यू कार्ड है आइल्स का, जो आइल्स का क्यू कार्ड है, दैट इज इंट्रोड्यूस्ड, वो इंट्रोड्यूस इस चीज के लिए किया गया है कि आप अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हो, ऑन द स्पॉट स्पीकिंग कर सकते हो. अगर आपने स्पीकिंग के मॉड्यूल्स को या स्पीकिंग के क्यू कार्ड्स को याद करके जाना है, तो उसका आपका कोई फायदा नहीं है, ना अपनी कोचिंग का फायदा है. अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट प्रिपेयर करा रहा है इस चीज को, अगर कोई इंस्टीट्यूट आपको सिर्फ प्रेपरेशन पे फोकस कर रहा है, तो कोई भी फायदा नहीं होगा आपकी प्रेपरेशन का. यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. तो आपको तभी कुछ सीखने को मिलेगा, तभी आप अच्छे बैंड स्कोर हासिल कर पाओगे, जब आप सीखने के साथ साथ किस तरीके से बोलना है, फ्लुएंसी कैसे इंप्रूव करनी है, ग्रामर कैसे ठीक करनी है, इन चीजों को सीखो, और क्यू कार्ड्स को जो ऑन द स्पॉट आंसर्स हैं उनको प्रैक्टिकली करके देखो. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस थिंग्स. प्रैक्टिस इज द की, एज आई ऑलवेज से. आपको बार बार आइल्स के टेस्ट देने पड़ेंगे. हमारे चैनल के ऊपर एक प्रोग्राम चल रहा है फ्री आइल्स स्पीकिंग मॉक टेस्ट का. आप रजिस्टर करने के लिए मैं एक नंबर दे देता हूँ यहाँ पे. अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा फॉर फ्री मॉक टेस्ट. मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ, आप उस नंबर को नोट डाउन कर लीजिए. दैट इज माई ऑफिस नंबर. सो आपका फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट होगा. अगर आप देना चाहते हो तो यू कैन रजिस्टर. इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए. I'll just type that down here. There we go. I'll pin that. Yes. So धीरे धीरे हम आगे स्पीकिंग के बारे में कंटिन्यू रखेंगे हमारी कन्वर्सेशन. सो दिस इज अबाउट क्यू कार्ड. यू हैव टू लर्न द एस्पेक्ट्स ऑफ क्यू कार्ड. यू डोंट हैव टू लर्न द क्यू कार्ड्स इटसेल्फ. आपको क्यू कार्ड्स के सिर्फ एस्पेक्ट्स को लर्न करना है, ना कि आपको सारे क्यू कार्ड्स लर्न करने हैं. इस चीज को बहुत 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 फोकस से समझिए.
कि क्यू कार्ड का मतलब है ऑन द स्पॉट स्पीकिंग। अगर आप उसको लर्न करके जाओगे तो आपको उस चीज का कोई भी 1% भी फायदा नहीं होगा। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। You getting my point, everyone? Yes. Please keep typing yeses so I can know that people are very engaging and people are getting connected. 7 बच्चे अभी हमारे साथ पढ़ रहे हैं, so that's a very good thing. Please stay connected, right? So questions पूछते जाइए, जितने भी सवाल होते हैं, क्योंकि सवाल कभी भी खत्म नहीं होते। About speaking, about IELTS, about your coaching, about even immigration, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हो तो I'm always willing to answer. So let's start with few questions. How to increase band in speaking from 6.5 to 7.5? Most important thing when you want to increase your band, मैं उसी चीज के बारे में बात कर रहा था कि क्यू कार्ड को प्रिपेयर नहीं करना। किसी भी बुक को ले लो, मक्कड़ को ले लो या लिस्ट को ले लो, कोई भी आप बुक लेते हो, किसी भी क्यू कार्ड को प्रिपेयर नहीं करना, रट्टा नहीं लगाना। क्यू कार्ड इंट्रोड्यूस इसीलिए किए गए हैं कि आप उसको ऑन द स्पॉट बोल सको। अगर आप इंग्लिश नहीं जानते, अगर मैं अभी यही स्पीकिंग टेस्ट पंजाबी में लूं, अगर मैं यही स्पीकिंग टेस्ट आपका पंजाबी में लूं और आपको बोलूं कि यस, अगर आप क्यू कार्ड करना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो, मैं कोई भी आपको टॉपिक दूं, हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਸੀ, राइट? अब यार मैं उत्थे घूमन गया सी, मैं आप 100 गल्लां कर लेने, राइट? हम बहुत सारी बातें बोल सकते हैं, राइट? इट्स वेरी इजी कि हम बहुत सारी बातें बोल सकते हैं, बहुत सारी बात इसके ऊपर कर सकते हैं। हिंदी में या पंजाबी में आप कहाँ घूमने गए थे पिछली बार, तो हम अब या मैं वहां गया था या मैं गई थी, वहां पे मैंने ये किया वो किया, वहां पे मुझे एक चीज अच्छी लगी, ऐसे हम बातें करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज हमको ये भाषा आती है, हम इस भाषा को सीख चुके हैं, हिंदी को, पंजाबी स्पेशली जो पंजाबी स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं, हिंदी स्टूडेंट्स जो मेरे साथ हैं, हम इस भाषा को सीख चुके हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? राइट? सो एनी क्वेश्चंस, जो भी आपके सवाल है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करें, मैं उसको आंसर करूंगा। सरप्रीत, आपके क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूं। तो अगर आपको बैंड इंक्रीज करने हैं, यू डोंट हैव टू लर्न स्पीकिंग, यू डोंट हैव टू क्रैम थिंग्स। आपको स्पीकिंग को सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा। द मोर यू स्पीक, द मोर यू लर्न स्पीकिंग। दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से। सो आपको फ्लुएंसी पे वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामर पे वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स मिलके आपको एक अच्छा स्पीकर बनाते हैं। एज आई एम ए मोटिवेशनल स्पीकर, मैं बहुत सारी स्टेजेस पे बोलता हूँ, बहुत सारे लाइव इवेंट्स किए हैं मैंने, यूट्यूब के ऊपर भी किए हैं, यूट्यूब वीडियोस भी मेरी हजारों पड़ी हैं, मेरे दूसरे चैनल स्पीकर सिंह के भी पड़ी हैं। सो ऑल यू नीड टू नो इज दैट वी स्पीक ओनली व्हेन वी प्रैक्टिस स्पीकिंग। आई हैव गिवन मोर देन 1000 स्पीचेस टिल डेट इन 3-4 years. So you need to know we only learn when we speak. Speaking is not about learning from books. Speaking is about learning from speaking, right? So that's it. Sir, COVID time gap ho ja nahi? Okay, on this question, COVID time, see, what is COVID time for you? When it's a curfew, when what about the gap? I say, if there is no section 44 in the month of gap you're expecting, you are not counted in gaps. अगर उस महीने का गैप जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चों का सवाल था, सर 2020 गैप में काउंट होगा कि नहीं होगा? 2020 गैप में जरूर काउंट होगा, बिकॉज कब कर्फ्यू लगा था? कर्फ्यू की डेट्स क्या थी? कर्फ्यू की डेट्स थी व्हाट? सिर्फ 21 मार्च से लेके 15 मई तक प्रॉपर कर्फ्यू लगा था। उसके पहले भी चल रहा था, उसके बाद ऑनलाइन भी चला है, बहुत लोगों ने जॉब्स की भी हैं अपनी। तो एक्चुअल में जो रियल कर्फ्यू या रियल लॉकडाउन रहा है, कर्फ्यू के टाइम को लॉकडाउन हम नहीं गिन सकते, बाकी सारे टाइम्स को हमको लॉकडाउन में ही कंसीडर नहीं करना सिर्फ, राइट? सो आपका गैप माना जाएगा। आप फाइलिंग भी कर सकते थे उस टाइम पे, सब कुछ कर सकते थे, एवरीथिंग वाज अवेलेबल टू यू। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर आपको ये चीज समझनी है, अगर आपको कोई इमिग्रेशन से रिलेटेड है, तो मैंने नंबर दिया है फॉर मॉक टेस्ट। उसी नंबर पे आप अपनी प्रोफाइल व्हाट्सएप कर सकते हो। आई कैन सी इट, मैं उसको एक्सेस करके आपको बता सकता हूँ, राइट? सो जसप्रीत कौर सेज हाउ टू इंक्रीज स्कोर इन बैंड इन रीडिंग। सो फर्स्ट आपको टाइपिंग सीखनी पड़ेगी। सी व्हाट यू रोट, हाउ टू इंक्रीज स्कोर इन बैंड इन रीडिंग। सो you need to focus on your grammar first, because जब तक आप अच्छे से ग्रामर लिख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, तो how would you read the right English? रीडिंग को इंक्रीज करने के लिए, रीडिंग को स्किल बनाने के लिए अपना,
आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा. जैसे अभी आपने लिखा हाउ टू इंक्रीज स्कोर इन बैंड इन रीडिंग. फर्स्ट सी दिस सेंटेंस कि आपका सेंटेंस कितना पावरफुल है, आपके सेंटेंस में कोई गलती तो नहीं है. सी यू शुड आस्क हाउ टू इंक्रीज योर बैंड्स score or you how to increase your scores in reading. Now score in band and reading kuch bhi nahi hota, right? So the first most important point that you have to learn is that you have to know the basics of English, the grammar, or the punctuations or the words you can use or how simple you can make English. हमारी इंस्टीट्यूट्स की गलती या हमारी एज एन आर्ट्स इंस्टीट्यूट्स गलती ये है कि वी जस्ट अ सेकंड वी स्पीड अप थिंग्स कि हम बहुत ज्यादा स्पीड से चीजें करना स्टार्ट कर देते हैं. हम बहुत ज्यादा हाई फाई इंग्लिश बोलने को प्रेफर करते हैं. दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. यू शुड नॉट डू दैट. सो दैट्स important, people. So you need to know that if you want to increase your bands in any module, you need to learn the basics first, right? So we were on cue card. Any cue card topic you would like to give me? अगर आप कोई भी क्यू कार्ड टॉपिक मुझे देना चाहते हो कि मैं आपको उस क्यू कार्ड का आंसर करूं, तो आई विल डू इट. मैंने तो अभी कोई प्रिपेयर नहीं किया, मैंने तो कोई क्यू कार्ड्स अपने सामने रखे नहीं है, राइट? आप दोगे टॉपिक और मैं आपको आंसर करूंगा. दैट्स द डील. सो यू कैन स्टार्ट डूइंग दैट एंड I would love to do that if you want me to answer any of the question or you want to ask people, because जितना आप ज्यादा सवाल पूछोगे किसी भी चीज के बारे में, स्पेशली आइल्स के बारे में या मॉड्यूल्स के बारे में, स्पेशली आपके स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे जो, सो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, राइट? Any questions, please ask down in the comment section. I would love to answer all of them because जो भी हम सवाल पूछते हैं वही हम बनते हैं जिंदगी में. सो बड़े ध्यान से अपने सवाल पूछिए क्योंकि we don't get chance. क्योंकि कई बार होता है कि there is no one to answer us and sometimes there is someone to answer us. हम सवाल पूछते नहीं हैं. So it's really important to ask questions that you really want to ask. You become the questions you ask actually, right? So it's really important. So we'll move to part 3 and usse pehle I want to take some questions. Please type down the questions, everybody. Okay, talk about a tall building in my city. So I'm from Moga. Basically, I'll tell you everyone. So this is the cue card this is all the topic. I don't say it cue card. Cue card ek aisa koi itna bada hua nahi hai. It's just topic. So I'll speak about this topic. Talk about a tall building in your city. So there are many tall buildings in my city because my city is now a city which is developing very fast. So there is one of the one of the buildings is Big Ban restaurant. So there is a restaurant in my city named Big Ban. It has a very tall building. It was the first building which was built in my city, which was as taller as it is. And I really liked it because I was too young. It was built like 10 years ago and I was just 10 years old or 11 years old at that time, and I was so fascinated by its length of tallness and I was really impressed by it. I was really happy to see that these kind of things and the modern infrastructure is coming to my city, and I was really happy about it. So what I did was I tried visiting this place many a times, and I had food there a lot of times with my family, and I also developed good things that I need to know for these tall kind of buildings. So it was a great opportunity for me to see this kind of development in my city, and it was an opportunity for me to see the future in my city. That's the reason I'm staying in my city, because I know the future is coming to here. So Big Ben is one of the tallest building in my city, and it's in a restaurant which delivers awesome food. It's tall like heaven, so we feel like whenever we go on the top floor and we feel it very good, right? So this is about 1 minute and 50 seconds, Satvir, right? It's about 1 minute and 50 seconds. So I know there are kind of things that we can improve, right? So it's nothing, it's just normal speaking that I did just now. There is an also video, मैंने वहाँ पे एक speaking दी हुई है 8 band 8.5 bands के near about जो मैंने score किए थे. You can check it out in this channel. So all you need to remember and all you need to think is that English is simple. English is about speaking. English is about practicing
चाहे वो पढ़ना हो, चाहे वो बोलना हो, चाहे वो सुनना हो, चाहे वो लिखना हो. It's about what you practice. If you practice something really good, you can really increase it, right? So we can move forward if you want. Thank you, Satvir Kaur. Would you describe an aquatic animal? You want me to do more cue cards, huh? So let's finish the basics first. So, sir, does IELTS difficult? No, IELTS is not difficult at all. Why you think that IELTS is difficult? See, I'll tell you my story on this. You want to know my story? Type a quick yes. How I learned English very easily. How I learned English very easily. No, I never did IELTS. I'm telling you, but I'm a Cambridge University topper. I topped Cambridge University in 2006, 7, and 8 from ESOL examinations. So, what is my story? Do you want to know my story? Just let me know. Type a quick yes. Anyone, if I get one yes, I'll tell you my story about how I learned English very easy. So, yes, I'll start with that. So, what happened here was my age right now is 21 years old, and I run a company named ULO Education. We deal in IELTS, coaching, immigration, studio, and such kind of things, right? Hello, Abhijot. Right. Hello, Abhijot and Japjot. So I'm a 21 years old entrepreneur. I run 7 to 8 different companies in different segments: IELTS, education, studio, digital marketing, immigration, especially, and the whole part is immigration. So I'm 21 years old right now. But when I was in 11th or 12th class, I say, or when I was in 10th, I could not speak English. I had a bad story. I had a girlfriend who had very high standards of living. So I couldn't speak English that much. I was not so financially powerful. I was not even financially stable, right? I was below middle class people. So we didn't had any opportunity to uh, deal with such kind of people, and we didn't know how to talk to these people. So always in life, we felt a kind of regret that we are born in such places that we cannot learn English. But when I started learning English, when I started speaking English like this, when you see me right now, it was very easy. Now, what happened was I left my house and I went to Ludhiana. I met a mentor who did not know much English, but he was very inspiring to me. So, what I did was I started to give speeches. I started to give speeches because I loved speaking. Why I only make videos on speaking on this channel. There are other people. My team is very big on this education thing for reading, writing, listening. Yadvinder sir is there, Jaspreet sir is there. We all are here to teach you people. But why do I speak mostly on speaking? Why do I take sessions on speaking itself? Because I have an abundance of experience in speaking. I have given more than 1,000 speeches in English. If you go on my other channel, the speaker sing, that's what I'm called. If you go on my other channel and you see there the last video, the first video, if you open, that is my first speech that was given on 2nd of September 2017, 4 years before. And you can go and check it out there of what level of English that I'm speaking then and now. What's the difference? How does this different come? From where does this difference come? Okay, this different comes from different kind of things. Now you need to really know it. What are those different kind of things? You want to know it? Yes, it's the fucking experience. If you experience things more and more and more, you get trained to those things. My first speech, I was speaking English not so good. Then I gave the second speech because I had to speak in English. As a motivational speaker, English is an important segment. Not now, I'm not saying English is very important for motivational speakers, but English is a very important segment for paid motivational speaking. If you want to earn money from speaking, then English is very important because you have to speak in companies, you have to speak in corporates then. And that's what I do. In past 4 or 5 years, I have given more than 1,000 speeches in English. I've spoken over Infosys Private Limited. I've spoken over Apple, Google, and such other companies, the big companies. So how can I speak in Hindi in these companies? How can I speak in Punjabi? I have to speak English. Although I don't know English, I never got trained for English. I never gave an IELTS exam. I never gave any other exam, right? So how do I generate this power of speaking English so powerfully? Just by practicing it. I go on stage. I don't care what my grammar is. I don't care what my English is. I don't care what my punctuations are. I don't care what my pronunciations are. I just speak.
And when you want to learn speaking, speaking is the most aspect of speaking. So if you want to learn speaking, you have to speak. Doesn't matter who you are, doesn't matter where you are, doesn't matter how you're doing things, you have to speak when you are about to learn speaking. चाहे वो आप अपने माँ बाप से बात करते हो, दोस्तों से बात करते हो, किसी भी लोगों से बात करते हो, आपको बोलने के लिए बोलना पड़ेगा. आपको बोलना सीखने के लिए बोलना पड़ेगा. अगर हम किसी बच्चे को बोलें कि यार अगर 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 कोई 2-3 साल का बच्चा है, वो बोलना शुरू नहीं किया अभी तक, उसको बुक्स दे दें, उसको क्यू का टॉपिक्स दे दें, क्या वो बोलने लग जाएगा? नहीं. उसको बोलना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो क्या बोले, किस तरीके से बोले. यस, क्वेश्चंस प्लीज. Sir, please tell me how can I improve my concentration power? It's my biggest problem. Okay, so concentration is very easy. You are only concentrated on things that you're interested in. What are you interested in and what are you concentrating on is really important, right? So why I am concentrated in business, why I am concentrated in teaching people speaking Ielts or such kind of things, because this is my core interest. I love doing it. I love doing it. There was a video, if in some other session I can show you. कल मैंने एक वीडियो देखी, मेरे व्हाट्सएप पे आई. एक बच्चा है, वो सारे ट्रम्पेट बजा रहे हैं. आपको पता ना ट्रम्पेट क्या होता है? सो वो सारे ट्रम्पेट बजा रहे हैं अपने अपने स्कूल में. कुछ स्टूडेंट्स है, एक स्टूडेंट है जो डांस कर रहा है साथ साथ में, बहुत मजे ले रहा है, ऐसे 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 अपनी टांगों को इधर घुमा रहा है, उधर घुमा रहा है. So this is what loving your job and doing your job. The difference between doing your job and loving your job is this. So that student, that little kid taught me how to love myself, how to love doing what I do. And when you start love doing what you do, you improve your concentration. So start loving what you do. Don't be bored. अगर IELTS नहीं हो रही, बैंड नहीं आ रहे, concentration नहीं बन रहा, IELTS को, इंग्लिश को प्यार करना सीखिए, इंग्लिश को बोलना सीखिए, उसको feel it like a person. Feel it like a person, so you grow more and more and more. आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी इस इंग्लिश के जरिए, and you have to accept it. You have to really accept it that you have to start loving. You have to start love with something you do. राइट अगर आपको कोई चीज अच्छी लगने लग गई तो आप उसमें इंप्रूव करेंगे. किरण बुट्टर सेज, सर 12 जून बीसी को पेपर होगा जलंधर. किरण, वी डोंट नो, वी हैव टू वेट अ लिटिल मोर. 9-10 जून को अपडेट आएगी स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से कि क्या अपडेशंस है फॉर कोविड रिस्ट्रिक्शंस, एंड उसके बाद मैं आपको साथ के साथ ही अपडेट देता चला जाऊंगा. यस, ऋतु पटेल, गुरप्रीत कौर, एनी क्वेश्चंस प्लीज ब्रिंग अप क्वेश्चंस. आई लाइक क्वेश्चंस बिकॉज ये जो क्वेश्चंस है ना, ये मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी लोग मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं इस टाइम, तो दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन लर्निंग. जो सीखना चाहता है उसको मैं सिखाना चाहता हूँ, चाहे स्टूडेंट 1 हो या 10 हो, या आई डोंट केयर. अगर एक भी स्टूडेंट है वो सीखना चाहता है और वो सवाल पूछ रहा है, इट्स वेरी गुड. कोई भी सवाल आपके मन में, प्लीज टाइप आउट. सर, विल 12 जून एग्जाम पॉसिबल और नॉट? आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी ईमेल फ्रॉम IDP. सुथर जी, यू विल रिसीव फॉर श्योर. अगर कोई भी अपडेशन होगा आपके लिए तो आपको ईमेल जरूर मिलेगी, तो प्लीज वेट फॉर दैट. किरण बेटो, वोकैब कैसे याद करें? वोकैब, नाउ व्हाट इज वोकैब? डू नॉट, मैं हमेशा अपने इंस्टीट्यूट में बच्चों को बोलता हूं, मोस्ट प्रोबेबली दैट्स व्हाट आई बिलीव इन, दैट 40% ऑफ द स्टूडेंट जिनके बैंड स्कोर्स नहीं आते स्पीकिंग में या राइटिंग में या लिसनिंग में या रीडिंग में, किसी भी चीज में, 40% ऑफ द स्टूडेंट्स जिनके बैंड स्कोर्स नहीं आते, वो स्टूडेंट्स इसीलिए रह जाते हैं कि वो वोकैब पे ओवर फोकस करते हैं, ज्यादा फोकस कर लेते हैं वोकैब पे. वोकैब को यूज करने की कोशिश करते हैं, कभी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होती, कभी उनको वर्ड का मतलब नहीं पता होता. जो पंजाब में और इंडिया में प्रॉब्लम बच्चों को फेस करनी पड़ती है, दे डू एक्स्ट्रा फोकस ऑन वोकैब. नो, मैं अभी कई इंस्टीट्यूट्स में जाता हूँ. मैंने पीछे से एक सर्वे किया था कि कौन से इंस्टीट्यूट्स की सर्विसेज किस तरीके की हैं, क्या देते हैं. मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि वो कई इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, कई स्टूडेंट्स की लर्निंग टेक्निक क्या होती है, वो पहले वोकैब 50 वोकैब्स एवरी डे. अब 50 वोकैब्स को करोगे क्या जब आपको उनको 50 वोकैब को, क्या आपको वोकैबुलरी प्रोनाउंस करनी सिखाई जाती है? क्या आपको वोकैबुलरी के रियल मीनिंग्स बताए जाते हैं? किस तरीके से, मैं मानता हूं मीनिंग्स बताए जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब आपको उसको यूज करोगे, किस तरीके से करोगे, बताया जाता है? नहीं बताया जाता. सो प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, किरण बुटर, डू नॉट फोकस मच ऑन वोकैब. बेसिक वोकैबुलरी याद कीजिए,
जो बेसिक वर्ड्स हम सभी यूज करते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट वोकैबुलरी आपको यूज भी नहीं करनी आएगी, प्रोनाउंस भी नहीं करनी आएगी। हमें भी कई बार प्रॉब्लम आती है, आई एम नॉट कमिटिंग दैट आई नो एवरीथिंग, सो वी आर ह्यूमन बीइंग्स, सो वी हैव टू वेट। 20 का 28 देखिए, Gurpreet Kaur, practice is what you have to do. Gurpreet Kaur, practice is what you have to do. अगर 20 क्वेश्चंस ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਅਟੈਂਪਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, then you have to speed up. You waste too much time on reading passages or something. आप सारा पैसेजेस रीड करने में अपना टाइम निकाल देते हो, सिर्फ 20 क्वेश्चंस, ये बहुत गलत चीज है आपके लिए। यू हैव टू स्पीड अप थिंग्स राइट नाउ, सो स्पीड अप कीजिए। गिव 10, ज्यादा से ज्यादा आप रीडिंग टेस्ट लीजिए एक दिन में, राइट? रीडिंग या व्हाटएवर जो भी आप करते हो, लिसनिंग, रीडिंग, व्हाटएवर, जिसके में आपको प्रॉब्लम आ रही है, स्पीड बढ़ानी है, सो रीडिंग करते वक्त ज्यादा से ज्यादा रीडिंग टेस्ट दीजिए, जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। एनी क्वेश्चंस प्लीज पीपल पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई एम हियर टू आंसर यू पीपल। क्वेश्चंस पूछेंगे तो मजा आएगा, राइट? टाइप डाउन एनी क्वेश्चंस प्लीज, so I can answer that and we can move forward with the session. हमारा एक जो लास्ट थर्ड पार्ट ऑफ स्पीकिंग है वो अभी पेंडिंग है, और हम फिर कुछ डिस्कशंस भी करेंगे, फॉर इम्पोर्टेंट डिस्कशंस करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को लाइव ट्रेनिंग्स करनी है हमारे साथ, फ्री मॉक टेस्ट देना है आपको, तो आप पिंड कमेंट में हमने एक नंबर लीव किया है, वो उसको व्हाट्सएप कर सकते हो, तो आपको फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ऑनलाइन होगा, तो राइट। Kiran, you have to wait for that. That's a long topic. You just WhatsApp me this topic. I'll teach you personally this. और हम जब राइटिंग में सेशन रखेंगे, सर अभी आएंगे कुछ टाइम में, और मंडे विल हैव अ सेशन ऑन दिस, तो तभी विल डिस्कस दिस। दिस इज अ लॉन्ग थिंग टू डिस्कस, राइट? बट आई विल टेल यू बेसिक्स ऑन द व्हाट्सएप एंड विल हैव अनदर सेशन। स्पीकिंग पार्ट 2 में फेल्ट के बारे में प्लीज ऋतु पटेल, प्लीज आप अपना क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर कीजिए। स्पीकिंग पार्ट 2 में फोर्थ क्वेश्चन जनरली फेल्ट के बारे में होता है। फेल्ट, व्हाट डू यू मीन बाय फेल्ट? हाउ डू यू फील और व्हाट? आई विल एक्सप्लेन फॉर श्योर, दिस सेशन इज अबाउट स्पीकिंग, मैं सब कुछ समझाऊंगा। प्लीज थोड़ा सा क्वेश्चंस को क्लियरली लिखिए। अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो बेटर होगा, आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आई कैन अंडरस्टैंड बेटर। या फील, or how do you feel about this, or how you're feeling right now about this? Is that what you mean? Please type a quick yes. I'll explain you for that. Please type a quick yes अगर आप वही चीज की बात कर रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ, about feeling about something, क्या, how do you feel about this and how you're feeling right now? Okay, yes. So what happens here is you don't get content. आपको जो क्वेश्चन होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई क्यू का टॉपिक है, एग्जामिनर आपको पूछता है कि सर आपको हाउ डू यू फील अबाउट दिस टॉपिक, अबाउट दिस थिंग, अबाउट दिस पर्सपेक्टिव। सो द प्रॉब्लम दैट अराइजेस इज यू डोंट नो द कंटेंट, यू डोंट हैव द कंटेंट, आपको मिलता ही नहीं है कंटेंट, राइट? सो व्हाट टू डू विद दैट सर? दैट्स अ रियली बिग प्रॉब्लम। तो अभी मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल। मैंने आपको क्या बताया अभी? मैंने इस सेशन में, सारे सेशन में क्या बताया? यही बताया ना, यू नीड टू प्रैक्टिस। क्या प्रैक्टिस करना है? इंग्लिश को, कंटेंट को नहीं। कंटेंट को नहीं प्रैक्टिस करना, बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करना। द प्रॉब्लम विद अस इज दैट वी प्रैक्टिस द कंटेंट, नॉट द लैंग्वेज। The problem with us is we practice the content, not the language. जो भी बच्चे आइल्स कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि जो बच्चों के बैंड्स नहीं आ रही, उनमें से 50% स्टूडेंट्स के बैंड्स आ जाएंगे वो अगर वो कंटेंट को छोड़ के लैंग्वेज को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। यू डोंट हैव टू लुक फॉर कंटेंट रुचु पटेल, आपको कंटेंट ढूंढना नहीं चाहिए। व्हाट यू नीड, अभी मैं अभी रिमोट की एग्जांपल ली थी। अगर आपका क्यों का टॉपिक ये रिमोट है, हाउ डू यू फील? अगर यही सवाल मैं पंजाबी या हिंदी में पूछूं, आप बोलो यार ये अच्छा रिमोट है लेकिन
तो पता है मैंने एक मोड यूज किया था, दैट वाज मच बेटर, कि वो अच्छा था और उसमें ये भी क्वालिटीज थी और ये इसमें नहीं है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए, छोटा बहुत है ना, थोड़ा सा हैंडी नहीं है ये, थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा फील होता है। तो और भी इसमें चीजें हो सकती थी, दैट आई थिंक, राइट। ऐसा हम बोल सकते हैं ना किसी भी चीज के बारे में हिंदी और पंजाबी में। तो कंटेंट कहाँ से लाया मैंने तो प्रिपेयर किया नहीं, राइट। तो मैं तो कंटेंट ले आया, ये कंटेंट नहीं है, ये लैंग्वेज सीखनी है। हम की प्रॉब्लम यही है कि जब हम स्पीकिंग करते हैं हमको वो बोलना पड़ता है, हमको अपनी स्पीकिंग टॉपिक को बोलना पड़ता है पहले अपने माइंड में, फिर हम जुबान पे लेकर आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको इतनी प्रैक्टिस करनी होगी, इतनी प्रैक्टिस करनी है। ये सिर्फ आपकी आइल्स के एग्जाम की बात नहीं है, ये फ्यूचर में भी काम आएगी चीज। अगर आप सोचते ही इंग्लिश में हो, राइट नाउ, पहले क्या होता था जब मैंने स्टार्ट किया, पहले मैं 2-3 लाइनें पहले प्रिपेयर करता था, या ये मैं बोलूंगा, फिर मैं बात स्टार्ट करता था। लेकिन अब ऐसा होता है, whenever I speak very directly and without preparing any kind of content in my mind, and I just keep speaking about whatever I want to speak. So I don't have to prepare content for that, right? Why do I need content for that when I know things what I have to speak? So we have to learn the language, not the content. कंटेंट का रट्टा लगाना छोड़ दीजिए, क्यू कार्ड्स का रट्टा लगाना छोड़ दीजिए, स्टार्ट लर्निंग द लैंग्वेज, आपको बहुत हेल्प होगी। याद गिल, थैंक यू सर। Any questions, please, people, put down in the comment section so we can answer it. Any other questions related to speaking and your IELTS test, please type down in the comment section so I can answer your questions, please. Any questions, please? Thank you, sir. Thank you. Any questions, please type down in the comment section. Yes, I would love to answer your questions. So you have to type down the questions for that. This is not a writing session, please. This is a speaking session. So I'll talk about only speaking. Please write the questions about speaking till I end this live. राइटिंग के बारे में हम और सेशन रखेंगे मोस्ट प्रोबेबली टुडे और मंडे, तो यू कैन टॉक अबाउट राइटिंग देयर। फॉर नोटिफिकेशंस अबाउट दिस लाइव्स एंड सेशंस जो राइटिंग पे, स्पीकिंग पे, लिसनिंग पे या रीडिंग पे आते रहते हैं, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको और बेल आइकन दबाना पड़ेगा। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इट्स अ फ्री सब्सक्रिप्शन, फ्री कोचिंग, फ्री एवरीथिंग इज सो फ्री हियर। सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियोस, शेयर दिस लाइव वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो आइल्स कर रहे हैं, कि हम एक क्लास बना सकें और हम यहाँ पे टीच कर सकें, right? So we have to develop these skills, we have to develop the habit of creating a community. 12th June exam, no updates, Gurpreet Kaur. We have received emails for 19th June exam, but right now there are no updates for 12th June exam. Now 12th June का जो एग्जाम होगा उसके लिए अपडेट्स हमको 9th या 10th को आएंगी, क्योंकि वो एग्जाम होगा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट द स्टेट टेक्स डिसीजंस, कि स्टेट की गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है उसके ऊपर वो डिसीजन डिपेंड करता है। क्वेश्चंस प्लीज, एनी क्वेश्चंस अबाउट IELTS स्पीकिंग? सो हम इस लाइव को एंड करने जा रहे हैं, उससे पहले आई वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस। गुरप्रीत कौर, देयर इज अ नंबर, आप वहां पे मैसेज लीव कर सकते हो। जब भी अपडेट आ जाएगी, यहाँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी कोई अपडेट आ जाएगी 15 मिनट के मैक्सिमम 15 मिनट में वो अपडेट यहाँ पे अपडेट की जाएगी। एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अगर किसी के सवाल हो या कोई भी सवाल पूछना चाहे तो आई कैन आंसर देम राइट नाउ, जो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए, राइट। सो विल हैव अनदर सेशन सून, मोस्ट प्रोबेबली दिस इवनिंग 4 से 5 बजे हम एक और सेशन करेंगे, तो आप वहां पे भी जरूर ज्वाइन कीजिए। एनी क्वेश्चंस प्लीज एट द एंड। मैं 2 मिनट तक वेट कर रहा हूँ आपके क्वेश्चंस की, उसके बाद मैं सेशन एंड कर दूंगा। सो आई एम वेटिंग फॉर 2 मिनट्स फॉर योर क्वेश्चंस। प्लीज लाइक दिस वीडियो एज वेल इफ यू लाइक इट। प्लीज लीव योर प्रेशियस रिव्यूज ऑन ULO IELTS एंड इमिग्रेशन मोगा। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, हमारा मोगा में ऑफिस है, एंड वी डू IELTS कोचिंग एंड वी आर वेरी स्पेशलाइज्ड इन इमिग्रेशन, स्पेशली फॉर स्टडी वीजास। So any help you need related that, you can ask me out anytime. I'm always available. Right? Yes. Any questions, please? For last 2 minutes of this live session, any questions you can ask.
कोई भी सवाल आप पूछ सकते हो related IELTS speaking about immigration, and I'm here to help you out. And before I end this live, आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो. So I'm waiting for 1 or 2 last minutes. Any questions, please put down. हम आज शाम को फिर से कनेक्ट करेंगे ऑन राइटिंग एंड रीडिंग, मोस्ट प्रोबेबली 4 से 5 हमारा लाइव होगा, एंड वी विल बी preparing about it. So a specialist of writing and reading would be with you for that. उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें right now and share this video with your friends. Share this channel. In fact, शाम को 4 बजे हम क्लास लगाएंगे आज. अगर आप चैनल को शेयर करोगे तो let's see if we gain good subscribers. And अगर 10 से 12 सब्सक्राइबर्स इस वीडियो से आते हैं then we'll surely do a writing session. राइटिंग के ऊपर हम 4 से 5 बजे आज ही हम सेशन करेंगे. अगर 3 बजे तक वी गेट गुड रिजल्ट्स फ्रॉम दिस लाइव वीडियो, बिकॉज हमको एफर्ट्स करने का तभी अच्छा लगेगा जब हमको कुछ आउटपुट मिलेगी आपकी तरफ से, when we connect with more people, right? Because we are not charging anything these for live videos. Not even our channel is also not monetized. We are not doing ads on our channel. We are also not charging any money from you. Free classes will start on this live channel daily, and we need your support for that. Please share this channel with your friends. Share the latest एजुकेशनल वीडियोस, रीडिंग की, राइटिंग्स की बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल हैं. वो भी आप स्टडी कर सकते हो. जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आज 4 बजे शाम को, अभी 1 बज गया है, 2, 3 एंड 4, 3 घंटे बाद हम फिर से क्लास लेंगे. अपने पेन एंड पेपर्स लेकर बिल्कुल रेडी रहिए. जहाँ हम एक टॉपिक लेंगे, उसके बारे में आपको 1 से 2 घंटे पढ़ाएंगे. तो एक प्रॉपर ऐसे करेंगे या कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे. द IELTS रीडिंग और राइटिंग एक्सपर्ट will be with you, so you have to be prepared about it. Please subscribe this channel. Please share the channel with your friends. Do leave a review कि आपको ये क्लास कैसे लगी, ये 1 घंटे का सेशन आपको कैसा लगा. It would be really of help. And any questions? Last 1 minute before I end this live video. Last 1 minute. Please ask your questions. Otherwise, let's meet in the evening. Right, people. If you have any sort of questions, please type down. Okay then, friends, I think there are no questions from your side. So we will meet you at 4 p.m. today. 4 p.m. Stay ready. Stay with your pen and papers for writing session. Today we'll be conducting a session on writing, and an expert of writing will be with you. And that's it for today. Thank you so much for this live training. Thank you so much for being with me, and हम मिलते हैं फिर से कभी, right? Thank you so much. See you.